कितना कमा लेते हैं फिटनेस कोचेस या योगा प्रैक्टिशनर्स इंडिया में? कैन यू गिव अ बॉल पार्क फिगर ऑफ हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर मी टू डू अ ट्रेनिंग? और थोड़ा सा उसका सिस्टम बता सकते हो कि वो जो ट्रेनिंग है क्या वो मुझे लाइसेंस करता है या फिर मुझे कोई लाइसेंस के लिए और सब्सक्राइब करना पड़ता है? अगर आपको इंडिया के बाहर हम्म प्रैक्टिस करना है एज एन इंस्ट्रक्टर, आई वुड सजेस्ट टू फ्रीलांस फिटनेस ट्रेनर बन रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंट इनकम एक साल के लिए नहीं होने वाली, वो पकड़ के चलो एंड कई कई महीने आपकी इनकम होगी भी नहीं। Could you share a list of books that people यहाँ पे जैसे आपने बोला corporate trainings can really pay you well, तो corporate trainings मिलती कैसे हैं? Like सामने से आती हैं या फिर मुझे cold emailing या कुछ ऐसे reach out करना रहता है अपनी साइट से? I feel like if you have to touch someone to check their form or improve their form, तुम एक अच्छे कोच नहीं हो। Share a few tips for people who want to pursue their career as a fitness coach. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं कोमल। सो कोमल इज अ मूवमेंट कोच. She is a lawyer turned fitness coach, and today's podcast is all about yoga and movement. And if you want to make your career into yoga or fitness coach, then stay tuned till the end. बहुत सारे insights आपको मिलेंगी. Komal is an expert when it comes to practicing yoga, training people for yoga and movement and strength training and a lot more stuff we'll discover. So welcome to the show, Komal. How are you doing today? Thank you for having me here, Pooja. I really like the fact that you bring in insights to students. And I was just telling you, like, I wish I had your podcast as a resource when I was a student, because I know how helpful it is to hear insights from different kinds of people who have different careers. So thank you so much for having me here. And I'm doing really good. I hope that you're doing good as well. Absolutely fine. And you are sort of passing that energetic vibe to me through the screen, even though we are we are in two different time zones, but still I can feel this radiating energy that you're carrying. So I am, I super am stoked to have you here. Thank you. I'm grateful that, you thought that I'd be able to share some of my insights with people who follow you. No, absolutely. I did go through your Twitter and found that your insights are so like relatable and एकदम से ना youth को direct करते हैं कि train today, did you move today? So it really hits you hard when someone having such a friendly vibe, you can definitely connect with the people like you. So that was like, okay, मैंने सोचा कि it'll be nice to connect with you and have you on the podcast and discuss everything about yoga and making a career out of it. That's so interesting though, because जब मैंने originally ये चालू किया था, did you move today? It was actually quite selfish, because it was a way that I was keeping myself accountable. Like if I moved, I should tell them and I would ask them. Then it became a thing. I don't know when. And in fact, I didn't realize कि लोग actually notice करते हैं, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था ये डालना, and वैसे ही मतलब मूड नहीं था. I was still working out, but then मेरे को message मिले कि अरे you've not asked if I moved today, and I was like, oh, like लोग देख रहे हैं ये. So very soon it became a thing, something I started for myself. It was very nice to see how something मैंने जो randomly चालू किया था, is a thing that's become kind of like my brand online. एब्सोल्युटली। पता है क्या, मतलब मैं एज अ यूजर बताती हूँ, लाइक एज समवन हु फॉलोज यू, तो जब आप वो पोस्ट डालते हो ना, तो आई आस्क दैट क्वेश्चन माई सेल्फ, राइट? बिकॉज यू आर आस्किंग मी डायरेक्टली, डिड यू मूव टुडे? आई लाइक, ओके यार, नो आई डिडंट, मे बी प्रॉब्ली अभी टाइम है क्या जिम जाने का? सो Right. इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट. सो Yeah. दैट्स व्हाई आई थिंक it's people, it's working for people. Yeah. It's nice. Feels good. Right. So, Komal, let's start from the beginning. You studied law, right? And then you moved into a completely different field. So, I'll tell you something when I hear the word lawyer, right? तो हम जब सुनते हैं कि कोई law field से belong करता है, एक perception आता है mind में that this person must be rebellious, this person must be aggressive, logical and rational. And here you are, दूसरी तरफ आप हो जहाँ पर आप योगा, strength training, spirituality की बातें कर रहे हो. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? Honestly, बिल्कुल प्लान नहीं था. आई विश दैट आई कुड से दैट मैंने बहुत एफर्ट करके ये प्लान किया, बट like it just happened one after the other. So to give a brief intro on like my education, after 18 years, अभी इंडिया में आप for 5 years integrated law course कर सकते हो, तो मैंने वो किया है from Mumbai University.
And generally you do BA, LLB, or stuff like that in general in India. But Maharashtra may, if you, at least in Mumbai University, they have a degree that time called BLS LLB. I'm not sure, or if it's been a while, so I'm not sure if I'm messing up the short form, but it's a little different in Mumbai University is what I remember. But basically the structure is same. Like first 3 years आप BA type की studies करते हो, and then next first 2 years 3 years, and the next 3 years 2 years you do a lot of law based studies. Okay, so the total of 5 years. And यही Hmm. structure रहता है in all these NLUs, I think, and a lot of other law colleges. So after my college, my 12th standard got over. I studied science till my 12th standard, and I was studying in a school till 12th. Like in Maharashtra, they do junior college, but my Hmm. parents are North Indian and they're like, junior college kya hota hai? So both my sibling and me studied in a school till 12th. And after that, I had come to know about CLAT, the entrance exam for Yeah. law, and it interested me because those are the subjects that I liked anyway, and I used to read about them. So I said, why not? I was lucky enough that my parents didn't put that pressure on me कि यही करना है. And my dad in fact says if law is something that you feel like doing, it's quite a nice thing to study, and it's a difficult field, but why not? So I gave my CLAT, but it's a very competitive exam with which a lot of people gave. I got like NLUs, but towards the end wala NLUs, which I didn't want. Like that's Hmm. the allotment I got, and I didn't want to waste another year, taking the exam Yeah. again. So instead, I just took admission in Mumbai University Car College. It was a local college in Mumbai, and that's where I began. So my initial intention was always to be like, हाँ मतलब 12th किया है, college करेंगे, job लेंगे, which all of us grew up with. And in Mumbai University, if you're learning from any non-NLU college, it's more beneficial for you to actually start interning right from the get-go, because uh, Right. it's not a good name. It's not a big name college, right? तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है except your work experience. So I Yeah. also did the same thing that all most Mumbai law students do, which is you start interning right from the get-go at 18, 19. You do few internships here and there, 1 month, 2 months, 3 months. So I did that for a couple of for the first 3 years. I tried to understand what I'm curious in, but beyond my academic journey, fitness is a constant part of my life. Like since I was in school, I have played sport. I have represented my school. I have represented the state, and it's always been fun. It's not something that I have put extra effort in. It's just something that I've always done, and I have trained, I have played, and that is something that continued in law college as well. So training, working out, playing sport, exploring, going for hikes. These are things that I still did naturally, even when I was in college. So the thing is that once 5 years got over, um, you know, I was in a dilemma. Like that time, I wanted to take a gap year. मुझे gap year लेना था कि मैंने 5 साल लॉ किया है, मैंने 5 साल सिर्फ लॉ की इंटर्नशिप किया है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि कैन आई टेक दिस 1 year ऑफ. तब मैंने पढ़ा था काफी फिटनेस सर्टिफिकेशंस के बारे में, सो आई वांटेड टू डू दैट. बट ऑफ कोर्स, एंड आई थॉट दैट मैं वो फिटनेस सर्टिफिकेशन करूंगी एंड कुछ फिटनेस बेस्ड इंटर्नशिप्स करना चाहती हूँ 1 साल के लिए. But of course, there are Indian Mhm. parents who were worried about my future, and we said absolutely not. And they were quite worried. So I listened to them and I started working as a lawyer. So that's how I ended up working. And Okay. even then, I wasn't working, right? You still on a probation period with the company I was working with. So I Hmm. was in that probation period that I was like, I knew that they had told me that they'll give me a job at the end of it, but I was still in that Hmm. probation period. And it's during that time that I quit. So it's not like I was working properly, to be honest. You started working. You were almost working. Yeah, you can say that. And I think I worked there for about no, 6 months, almost 6 months. But the thing is, I call this phase of my life कि like मैं पागल हो गई थी. Like by the fifth month, I went mad. Okay, I call this a very chaotic phase of my life where कुछ हो गया. Like I don't, like if you live in Mumbai, you'll understand what I say when I say कुछ सटक गई मेरी. Like by the fifth month, I Okay. I was not happy, and it's not like I wasn't interested in what I'm doing. I didn't like it. I just had this
pull. There was this internal calling that what if? And that there was a point in my life where that internal calling became so strong that I did not know how to verbalize it. I just went by impulse. So मैंने वो छोड़ दिया randomly. Like मैंने randomly job छोड़ी. It was very random than what I did. And during that time, I was consistent with my yoga practice. Like I had come across a teacher around my um, third year of law college, Okay. and I loved her sessions. Like I had never practiced yoga till then, and I became a regular in her class. So that was something that I did constantly. So for 3 years, I trained with her. And when I quit my job, I still continued my yoga practice training with her. And then, since I was unemployed after my sessions with her would get over, she was a teacher who was up and coming on Instagram that time. Like she was trying to build a brand. So I would hang out after her session and help her shoot videos or, just hang out with Oh, her. So one day she asked me, "Don't you like have any work? Like why do you keep hanging around and helping me?" So I was like, "Actually, मेरे पास नहीं है काम करने को, and I'd rather hang out here than go home and listen to वही सब ताने कि कुछ काम नहीं कर रही, जॉब छोड़ दी and all of जॉब that." छोड़ दिया। हाँ, तो मैंने बोला इससे अच्छा इधर ही रहूँ। तो she said, "Why don't you go to my teacher, to Mysore, to study and get certified?" And I was like, "How will I go? मुझे तो बहुत कुछ सीखना है अभी योगा में। मैंने तो अभी start किया है. It's just 3 years." So she was very insistent, and she said, "No, why not go and explore this? And वैसे भी you're just chilling here. If you have money, put it there." So I did have a little bit of money. It wasn't a lot. You get sometimes you get little stipend, and I didn't have kharcha in Mumbai because I live with my parents. So I पेरेंट्स। put that money into my first TTC certification. Um, the TTC certification is a teacher training certificate that you can do for ओके, yoga. And ओके, then I went to Mysore and did my TTC, and that's where it all began. ओके। Hmm. So that's where it started. That's where you figured out, okay, this can be something. So जब Yeah. आपने सोचा कि मैं यार ये टीटीसी ट्रेनिंग कर लेती हूँ, उस टाइम भी दिमाग में ये तो नहीं आया होगा कि मैं इसको एज अ फुल टाइम करियर ऑप्ट करूंगी? यू वर जस्ट लाइक कि मैं कुछ वैसे भी नहीं कर रही हूँ, माइट एज वेल ट्राई एंड डू दिस। यस। तो मैं ऑनेस्टली अपने खुद के लर्निंग के लिए गई थी। मैंने सोचा अगर मैं योगा कर ही रही हूँ तो उसको डेप्थ में सीखने सीखना अच्छा रहेगा। हम्म, एंड व्हाई नॉट, एक नई चीज एक्सपीरियंस हो जाएगी, राइट? तो मैं जब हम्म, गई थी तो कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और हम्म, उस कोर्स में एक मॉड्यूल होता है जिसमें आपको दूसरे लोगों को सिखाना होता है। राइट। एंड जब मैं वो कर रही थी तब मुझे एक डिस्कवरी हुई कि मुझे उसमें बहुत मजा आता है, एंड आई एम एक्चुअली गुड एट इट। लाइक मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला, एंड हम्म, मजा बहुत आया। लाइक मुझे एक्साइटमेंट हुई जो मुझे बहुत टाइम से फील नहीं हो रही थी लाइफ में। तो बट हम्म, स्टिल मैंने ये नहीं सोचा था कि ओ अब मैं वाप क्योंकि वो टीटीसी का कोर्स ना सिर्फ 1 महीने का होता है, तो आप 1 महीने में ये नहीं डिसाइड कर सकते ओ यही मेरा जॉब होगा, करेक्ट? करेक्ट। बट मैंने ये सोच लिया था कि ये एक ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली आपकी हम सबकी कंडीशनिंग ये होती है कि आप कॉलेज करो और आप जॉब करो। तो मेरी भी कंडीशनिंग वही थी, क्योंकि डर लगा रहता है कि कंसिस्टेंट इनकम कहाँ से। कहाँ मैं भी से यही आए? सोची थी ये सिर्फ एक फेज है, हो जाएगा, करके देखते हैं। तो मैंने सोचा ये फेज है, अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैं घर पे गई और फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। मैंने सोचा यार मुझे अभी मन नहीं है टू गो थ्रू दैट सेम जॉब प्रोसेस, द सेम एनवायरनमेंट इन मुंबई जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस करी थी। व्हाई नॉट अप्लाई फॉर मास्टर्स एंड सी इफ दैट इज समथिंग दैट आई कैन डू। मे बी आई कैन डू माई मास्टर्स, एंड एक ऑप्शन है कि मैं योगा साइड में सिखा सकती हूँ, क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया दे रियली appreciate Indian yoga teachers, outside, and it's एब्सोल्युटली। good money to make. And masters is quite expensive. So of course, if you take a loan, also you still need to earn something on the side. तो मैंने सोचा क्यों हम्म, नहीं, why not? Why not to see if I can manage this? So I got into a few unis, especially one that I really wanted to get into. But तब ये हो गया कि तब कोविड चालू हो गया, एंड कोविड चालू हो गया, एंड and till then what I was doing is while I was applying for my masters, मुझे अपना जो मैंने जो कॉन्फिडेंस डिस्कवर किया था टीचिंग का, आई डेंट वांट टू लूज इट। तो मैंने अपने हम्म, योगा टीचर से बात की थी, एंड शी हेल्प मी आउट, एंड आई वाज एक्चुअली असिस्टिंग अनदर योगा टीचर फॉर फ्री। दे डिडंट पे ओके। मी, बट आई थॉट व्हाइल आई एम अप्लाइंग फॉर माय मास्टर्स, दिस इज समथिंग आई कैन डू। तो मैं टीचिंग से टच में रहूंगी एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। So I was assisting for free, and I was applying, and I was taking a little bit of a break in general. हम्म, तो हम्म, फिर कोविड हुआ एंड आई गॉट इनटू माय मास्टर्स। तो तब ऑनलाइन
सेशंस का ऑप्शन नहीं था उस यूनिवर्सिटी में, तो उनने मुझे ऑप्शन दिया कि मैं 1 साल तक डिफर कर दूँ सीट नेक्स्ट ईयर के लिए। Okay. So I chose that and I said, okay, I'll come next year. And then in the meanwhile, my parents are like, what are you going to do? Like till then. So I convinced them and I said, hey, now I have got a seat at a place, right? And I've confirmed it. So क्या आप मुझे this time can you give me to really put in some effort into yoga and as a trainer, and that way मेरे skill ठीक रहेंगे. So in when I do go outside of India for my study, then I'll be more confident as a teacher, and this can be a side hustle. So thankfully, my parents agreed because they knew that this is a phase, and end option, she's going out to study. So that's where it began. And during COVID times, like I had applied to a few places that time in a few studios, but COVID हो गया तो वो सारी profiles online बन गई. So then I started Hmm. teaching with them online, and then I also started teaching my own students online. And it started with one student, to be honest. वो भी मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं काफ़ी फ्री सेशंस होल्ड करती थी, मेरे दोस्त आते थे और ऐसे करते-करते I got my first student who texted me on his own saying, I have this issue in my body and I attended your free session and I want to do a regular thing with you. And he paid me. And I still remember that was like my first payment. And I was like, oh, that felt good. So that's where it started. Like from one paying student to like, it became a thing where people started coming in and a small community was formed. Yeah. And today the community is only growing and getting stronger. Yeah. Thankfully. Chal gaya. Yeah, yeah. I want to, pause here and I want to take you back to the TTC, the yoga teacher training that you mentioned. So, can you give a ballpark figure of how much will it cost for me to do a training? और थोड़ा सा उसका सिस्टम बता सकते हो कि वो जो ट्रेनिंग है क्या वो मुझे एज लाइसेंस्ड योगा प्रैक्टिशनर मुझे लाइसेंस करता है या फिर मुझे कोई लाइसेंस के लिए और सब्सक्राइब करना पड़ता है? थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हो? करेक्ट. तो टीटीसी एक्चुअली काफी वाइड रेंज है. ओके. हुँ, टीटीसी में आप एक छोटे से स्कूल से भी आप कोर्स कर सकते हैं एंड उनका कॉस्ट होगा अबाउट 15K to 20K. एंड आप ओके। एक रेजिडेंशियल कोर्स एक बड़े स्कूल से कर सकते हैं एंड दोज कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव अबाउट फ्रॉम 50K to even a lakh or more, so इंडिया में बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं जो टीटीसी ऑफर करते हैं. हुँ, मेरे हिसाब से लाइक पर्सनली मैंने टीटीसी रेकमेंड करना छोड़ दिया है क्योंकि द थिंग इज दैट योगा के काफी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आसना प्रैक्टिस के काफी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, सिखाने के तरीके डिफरेंट होते हैं. तो मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी आई शेयर एंड इफ यू फाइंड वैल्यू इन दैट देन दे कैन ऑफ कोर्स टेक फ्रॉम दैट. सो माई टीचर recommended me to train with her teacher. The thing is मेरा थोड़ा डिफरेंट है, लाइक काफी लोग रैंडमली कर लेते टीटीसी, राइट. हुँ, मैंने योगा 3 साल के बाद, लाइक 3 साल मैंने रेगुलर आसना प्रैक्टिस किया था किसी टीचर के साथ और फिर मैं उसके बाद कोर्स किया, तो मेरे पास और भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था योगा में. राइट। और फिर टीटीसी मैं करने गई तो मैंने मैसूर से किया. एक स्कूल है जिसका नाम है इंडिया योगा, INDEA. ओके. हुँ, And I love them. I learned under my teacher. I learned directly under Bharat Shetty sir. He's an हुँ, incredible teacher. And that school, when जब मैं गई थी तब उस एक महीने का TTC का ऑप्शन था, I think 75,000. And that is if you do a residential TTC with sharing room with someone. And अगर आप individual room रहते हो वो अलग रहता है. So that is for India Yoga. Then there's another school in Mumbai itself, which is one of the oldest yoga schools in the world actually, I think, or in Asia. I'm not. I ओह! don't know. But that school is called the yoga school. Yeah. So they can actually look that up online. And हुँ, yoga school की काफी different options है. Actually COVID के बाद काफी variety हो गई है. काफी लोग online TTC भी opt करते हैं. Personally मैं वो recommend नहीं करूंगी because मेरा bias है. मुझे लगता है कि अगर आप physical एक एक वाइब होती है, लाइक दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ और टीचर्स के साथ फेस टू फेस कनेक्ट होता है. सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड डूइंग अ रेजिडेंशियल टीटीसी और इन पर्सन टीटीसी. बट अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन टीटीसी भी होते हैं एंड आई थिंक इंडिया योगा भी ऑनलाइन ऑफर करता है, तो दैट इज ऑल्सो थिंग यू कैन चेक आउट एंड वो यूजली चीपर रहता है उससे. सो दिस ओके, इज यूजली द कॉस्ट, इट वेरीज. दीज आर द this is the knowledge I had about the schools that I can give you. But if you Google it also, TTC in India, most of them have very
डिटेल वाली वेबसाइट जिसमें आप देख सकते हैं शेड्यूल क्या होता है, तो आप देखो कि आपकी इंटरनली आपको किस चीज में क्यूरियोसिटी है, एंड देन यू फॉलो दैट, एंड द बजट यू हैव, Hmm. दैट्स वन। टू, क्या होता है टीटीसी में? सो टीटीसी इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल फॉर्मेलिटी मेरे हिसाब से। इनफैक्ट टीटीसी एक स्टार्ट होता है आपकी योगा जर्नी का, आपका एंड नहीं होता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि आप सर्टिफाइड हो गए तो आप एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आप टीडीसी अटेंड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या नहीं पता। एंड Hmm. उसमें भी एक ही महीना होता है आपके पास, so they also cover only the surface level important parts about yoga. Yoga is a very big philosophy, right? So you can't cover everything in 1 month, but of course they cover थोड़ी बहुत चीजें जो आपको as a trainer and as a practitioner जरूरी होती है, and that's good enough. So Hmm. once आप, एटलीस्ट इंडिया में ये सिस्टम है कि आपने एक बार टीटीसी कर लिया, यू कैन स्टार्ट टीचिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज जो आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, या अगर आप Hmm. खुद करोगे, वो एक क्वालिफिकेशन काफी है। अगर आपको इंडिया के बाहर Hmm. प्रैक्टिस करना है एज एन इंस्ट्रक्टर, आई वुड सजेस्ट टू लुक अप द योगा अलायंस। आपको एक RYT होना पड़ता है काफी स्टूडियोज के हिसाब से। RYT मतलब रजिस्टर्ड योगा टीचर। तो अगर Okay. आपको रजिस्टर्ड योगा टीचर का टैग चाहिए, आपको एक पेमेंट देनी पड़ती है द योगा अलायंस को, एंड उनका एक लाइसेंस सिस्टम होता है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू टीच इन इंडिया, दैट्स नॉट कंपल्सरी, सो आई वुड सजेस्ट that you don't put your money in that. If you know that you're going to be based in India, it's a waste in my opinion, and it's Hmm. not necessary. That's the whole thing. That's जितना मेरे surface level था दिमाग में, I have shared. So yeah, I was saying कि I think बिल्कुल सही बताया आपने, and it will give a starting point for people to understand कि मुझे किस डायरेक्शन में रिसर्च करना है, मुझे कैसे योगा स्कूल्स को फिल्टर करना है जहाँ से मुझे टीटीसी करना है. So that's a good starting point, I would say. Um, Right. Let's go back to your story now. So while you were helping assisting a yoga teacher, तब आपने धीरे धीरे free classes देना start करा, and then someone reached out to you, and then they were your first student, right? Uh, क्या उस point पे भी लगा था कि I can monetize this and make a career out of it? I want to know what was that point when you were like, okay, this is something that I want to do full time. हो गया मेरा बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है. दैट एक्चुअली नहीं, उस मेरे फर्स्ट स्टूडेंट के पॉइंट में तो मुझे नहीं लगा था। मुझे हाँ. तब भी ये लग रहा था एटलीस्ट इट्स ठीक है, साइड हसल हो सकता है, वही था मेरा मेंटालिटी तब तक। Right. एंड बट ट्रूथ ये था कि मुझे मजा बहुत आ रहा था, एंड द थिंग इज, एज आई सेड, टीटीसी इज जस्ट द स्टार्ट, राइट? तो इनफैक्ट जब आप लोगों को सिखाने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि as a trainer, as a fitness trainer, your education never stops. You are always a student, right? Because you're dealing with people's physical body. And अगर Yeah. आपको उसमें passion नहीं है, this is why like the genuinely like cliche चीज है, but unless you love this field, आप नहीं कर पाओगे। तो my first TTC was just a start, but I have done many certifications after that also. Even within that year, I learned under other teachers. I did other certifications related to anatomy, related to just different systems in the body. Either I did courses or I studied, like self-studied on my own. Then, like, you also have to do a lot of work on your own body. Like, you can't teach people without experimenting on how you and your body react to certain things. सो दैट 1 year जिसमें मैं ये चीज कर रही थी, जो मैं लोगों को भी सिखा रही थी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टू स्टडिंग एंड अपडेटिंग माई नॉलेज, इन दिस, within yoga and within other fitness modalities. That 1 year I devoted to this. Then slowly it became a thing where, because I had a small group of regular students जो मुझे एक consistent level of income देने लगे. And I didn't realize it was happening till I was 6 months into it. And by that end of that year, I was like, oh, I have actually created a small thing. And tab tak I didn't even think of myself as a business owner. मैं खुद ही को बोलती रही, नहीं तो ये तो side hustle है, side hustle है. So I think around December is when I realized, okay, this is a thing I've created. I have a December consistent. 2020. Um, I think 2020, yeah, during Hmm. that month, and that next year, I still remember there was that window. And the thing is, with COVID timelines, I always get so confused because like those 2 years just seem like a blank blur to me.
बट आफ्टर दैट मुझे कंफर्म करना था अपने यूनी को, उनका एक एडमिशन सीजन आता है एंड उन्होंने मुझे ईमेल भेजा था. Hmm. That's where that that thought came in my mind. Do I really want to go? Do I Hmm. really want to go? And doesn't this make you happy? And then I really introspected तब कि यार देखा जाए तो एक कांस्टेंट रहा है मेरी लाइफ में, वो है फिटनेस मूवमेंट. एंड इट्स समथिंग आई जेन्युइनली लव सो मच दैट मेरे को एफर्ट नहीं करना पड़ता. लाइक पढ़ाई करने के लिए मुझे टोका जाता था, सब चीज के लिए टोका जाता था, बट मुझे 4 बजे उठ के ट्रेनिंग जाने के लिए कोई नहीं टोकता था. आई यूज टू डू इट ऑन माई ओन, यू नो. तो आई रियलाइज यार दिस इज समथिंग, इट्स बीन कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ एंड इट्स जेन्युइनली गिविंग मी हैप्पीनेस. बट देन एक डाउट की वॉइस थी, ये कंसिस्टेंट इनकम कब तक चलेगी, क्या ये एक फेज है. Nobody in my family is run a business. They all do jobs. What am I doing? You know. So this I was really battling with these two things. And finally, जब वो deadline आई थी that I had to say yes or no to the college, logical mind was telling me yes. बोल दो. मैंने draft भी किया था email saying yes, I'm coming on this day. When I was sending the email, though, I deleted the draft and I said, "Hey, I'm not taking the seat. You can give it to someone else." And while I sent it, I was like, "What am I doing?" The only voice in my head was, "What am I doing?" But I sent it, and I was so scared to tell my family that I didn't tell them. Like I didn't tell them that I have not accepted the seat. I just kept quiet and kept teaching, and I kept growing my community. And after a bit, though, my brother asked me, saying, "क्या हुआ उसका? Like तुमने कुछ बताया नहीं?" That's when I sat my family down and I said that I'm not a काफी मतलब I had a lot of firing from them in the sense that firing in the sense कि डांट नहीं, they were actually throwing a lot of logical questions to me like Yeah. ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या, इनकम कहाँ से आएगी, ये फेज है, you're successful now, what is this period of success passes. And they didn't understand the concept of fitness trainer in general. Like they didn't think that it's a legit field or a career option, which is fair क्योंकि उनको वो exposure ही नहीं था, right? So luckily I knew that they would ask me Yeah. these questions. So I actually had answers prepared for it. And at the end of it, I just said, could you trust me for 6 months and see how this goes? So they took that chance and they said, okay, we'll see. And I was lucky enough that they gave me that chance and they put that trust in me to see where will I take this small community that I've built. And it worked out because in that consistent income, then tab mere, uh, then there was also fire under me because मेरे को parents को prove करना था. So I also worked extra hard. Like there was that year, I didn't take a single break, by the way. I didn't take a holiday. I worked on weekends too. And it's a physically demanding job. So I didn't take a single break and I kept working just because I wanted to prove to them and myself that I can get the consistent income. I can get same amount of income as my law school peers are getting after their jobs. And to do that, I thought if I take a break, I lose out. So I kept working, which is also not a good thing. Like like I had to unlearn this toxic level of proving to myself after that. But I did it. And then, after 6 months, they looked at my numbers and they were like, yeah, it's pretty cool. And they also kind of understood the impact I'm making on other people's life. They got feedback. A lot of my own students would tell them that like whatever, they really appreciate my sessions, and my parents started listening to some of my advice, and then they also kind of wrapped their head around the fact that this is legitimate. जो कर रही है वो टाइम पास नहीं कर रही, लोग हैं जो उसके क्लास में आ रहे हैं. So by the end of 6 months, they also kind of had a little bit of respect and the fact that I'll be okay, like I'll manage. So that was the entire thing. It was quite chaotic, no planning, but just ho gaya. That's all. But I think that's what is the most interesting part about the story, right? कि पता नहीं था क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंधेरे में तीर मार दिया था, but when you are Yeah, in it, you are in it fully. So, and yeah, you're a testament of that कि भाई घुस गए तो घुस गए हैं, फिर उसके बाद देखी जाएगी yeah. क्या होगा. So I Yeah, think and perfect the thing is example. that वो optionality, like लोग मुझे Hmm. actually काफी messages मिलते हैं इसके लिए because they know that I shifted career, right? तो मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं कि मैं सीए हूँ एंड मैं बोर हो गई हूँ अपने जॉब से, मैंने योगा क्लास किए थे तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, अब मुझे योगा योगा टीचर बनना है, मैं कैसे बनूँ. और there'll be lawyers or there'll be people in marketing or ad agents or whatever, they are working high stress jobs, they've taken a Yeah. few yoga classes, फिर मुझे मैसेज आते हैं कि तुमने कैसे किया.
कैसे कर सकते हैं बट और फिर उनको ये इमेज होती है जैसे लॉट ऑफ ऑफिस गोइंग पीपल दे फील दैट मेरे जैसे लोग क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना मेरे काम का पार्ट है लाइक आई बी ऑनेस्ट ठीक है इंस्टाग्राम ट्विटर पर विजिबिलिटी मेंटेन करने से मुझे फायदा होता है तो वो लोग मेरी लाइफ देखते हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और उनको लगता है कि वाओ व्हाट अ नाइस लाइफ ओह इट्स सो कूल शी कैन डू दिस it's good it is cool but you also have to realize I don't have there was a phase I couldn't take a single holiday when it means that you don't have a life you really don't as a fitness trainer आपको अगर 6 बजे का क्लास लेना है आपको क्या लगता है हमारी क्या प्रिपरेशन होती है like I don't have night outs I sleep at a ungodly early hour so these are things and you also don't have a consistent income you get it like office वाले लोग ये नहीं समझते कि like उसके साथ क्या रिलेटेड एंजाइटी आती है तो अनलेस अगर आपको एक्चुअली आपको डिटर्मिनेशन है कि यू विल बी ओके विद दिस देन यू शुड वेंचर इनटू वर्किंग ऑन योर ओन अदरवाइज you should actually talk to people like me and see how our actual day is before deciding such a drastic thing. Like आप switch कर सकते हो career, but I would suggest a more conservative approach. Like मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं करने को because it was very chaotic and very high stress. And उसकी वजह से I had to work very hard to like maintain a Yeah. constant income, etc. What I would suggest if you genuinely want to explore a different career option, from my own experience, I would suggest is आप अपनी job करो and put in extra effort after the job. Either you put effort after your day to study about the field that you want to get into. उनसे बात लोगों से बात करने के लिए जो उस फील्ड में है अगर आपको फॉर एग्जांपल फिटनेस ट्रेनर करना है चलो मैं इसकी बात करती हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप किसी को शैडो करो आप उनको बोलो कि मैं हर वीकेंड में आपका असिस्टेंट बनूंगा बनूंगी ठीक है फिर आप वीकेंड पे उनके साथ काम करो and mostly people are quite open to this. You can always shadow a fitness trainer friend of yours or someone you approach online, study. And अगर आपको paying classes लेने हैं, then you manage it with your full-time job for a bit. Like, Hmm. extra classes ले लो, आप teach कर लो weekend पे, extra income के लिए. आप after your office you do that. So you can do these things. या फिर अगर आपको genuinely आपको quit करना अपनी job, have a safety net please. Like, at least have savings. तो आप कैलकुलेट करके रखो कि आपके फूड रेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सपेंसेस क्या होते हैं एंड एटलीस्ट हैव अ नेट फॉर 6 months 1 month क्योंकि जब आप फर्स्टली अगर आप फ्रीलांस फिटनेस ट्रेनर बन रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंट इनकम एक साल के लिए नहीं होने वाली है लाइक यू जस्ट वो पकड़ के चलो एंड कई कई महीने आपकी इनकम होगी भी नहीं सो यू नीड दैट सेफ्टी नेट एंड इफ यू डोंट हैव दैट सेफ्टी नेट देन इट्स वेरी टफ सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव एन एक्चुअल फुल टाइम जॉब प्लीज बी रियलिस्टिक एंड इसमें ट्रांजिशन में टाइम लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं आज जॉब छोड़ दिया कल फिटनेस ट्रेनर बन जाओ बिल्कुल नहीं टेक इट लाइक 6 months 1 year आई नो पीपल हु टेकन 2 years योगा टीचर्स जो फुल टाइम जॉब करते थे एंड उनको 2 साल 3 साल लगे अपनी जॉब छोड़ने के लिए ट्रांजिशन करने के लिए सो हैव पेशेंस दैट you want to do Hmm. this transition it's doable if you are realistic and don't take any chaotic crazy decisions especially if you have responsibilities you have parents you're earning for home well Instagram पर देख के don't get Hmm. dazzled that's all I'd say हाँ मतलब इफ यू हैव डिपेंडेंस ऑन यू लाइक योर फैमिली तो yeah फिर एकदम से इतना रिस्की लेना काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है करियर वाइज भी एंड फाइनेंशियली भी यू आर correct यंग यू आर वाइल्ड आई बिलीव लाइक यू हैड दैट रिस्क एपेटाइट कि risk आप जो है appetite. I'll be honest, I had safety net, right? I lived with my yeah. parents. I wasn't paying rent. I wasn't that stressed about bills. Only bills I had were mine. So I was privileged in that sense. So it's something that I always make it clear that I am have that privilege. And if you don't check where you are currently in your life and plan according to that, not because of how someone else has done it. You don't know their background. एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत ही लॉजिकल एडवाइस आपने यहाँ पे दिया है कि बिल्कुल अब्रप्टली डोंट जस्ट जंप इनटू इट पहले कन्विंस हो जाओ दैट दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू तब फिर अपना टाइम एफर्ट मनी जो है उस चीज में इन्वेस्ट करो बिकॉज Correct. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपनी सिर्फ जॉब से स्ट्रेस्ड होते हैं एंड वी जस्ट नीड अ ब्रेक वी डोंट नीड टू रियली स्विच अ करियर वी जस्ट नीड अ Yes. ब्रेक Exactly. Exactly. So वो ब्रेक आपका कभी कभार सेटिस्फाई एक वीकेंड
जॉब से भी हो सकता है, like just shadow, as I said, you can always shadow your trainer friends, or if all you have to do is approach for someone you respect online, tell them you want to learn, and mostly people are very nice and accommodating, वो आपको करने ही देंगे, तो अब आओ shadow करो, but dip your toes into the water rather than diving into it completely right from the go, and plan well is what I would say. Wonderful advice, very realistic. So, Komal, I want to take you back to two things that you had mentioned. Ki TTC जो है, it's just the beginning of your career into yoga. It's not the end. कि it is not कि आपने बस कर लिया, ये रेगुलर लाइफ कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है कि कॉलेज की डिग्री हो गया तो जॉब भी हाथ में आ जाएगा एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ बिगर बिगर लेवल प्लेइंग फील्ड टू एक्चुअली गेट इनटू. तो आपने जैसे बोला कि नॉलेज एनहांस करने के लिए 2-3 सर्टिफिकेशंस और करे आपने रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड देन रीडिंग बुक्स एंड ऑल. कुड यू शेयर अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट पीपल कैन रीड ताकि उनको अगर किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी वर्क्स, द एनाटॉमी ऑफ बॉडी, तो एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि चलो बिफोर डूइंग एनी कोर्स आई कैन रीड द बुक एंड सी इफ दिस इंटरेस्ट मी. मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. um I'll actually do. So what I did is I did one TTC. Okay. Hmm. Then I took a small break and I taught people. And then Hmm. I went back for the second. So I went back for more TTC education. So there are different hours you can do. So the first hour I did is 250 hours. Then I did Okay. another 300 hours or something like that. So it's like a total of 500 hours of study. So I went back to Mysore to study more with my teacher. Okay. So I did about a total of 500, 600 hours of study, something like that with them. And apart from that, I would suggest one thing. If yoga is what you're interested in, I would not suggest doing it via books, because the thing is कि books काफी varied है, lineage के हिसाब से है, and अगर आपको previous knowledge नहीं है, like for example if you don't have uh, enough amount of knowledge about yoga sutras, about uh, the Sanatan philosophy, then it becomes very difficult to grasp and काफी boring है. What I would suggest to actually satisfy your curiosity is learn with one yoga teacher. Even if it's an asana Hmm. practice class, learn with one yoga teacher that you truly like and you vibe with. The physical practice I'm talking about, at least for 3 months. Okay? Hmm. Because that's where you will. एक तो जब आप फिजिकल प्रैक्टिस करते हो उस क्लास के दौरान ऑल्सो आप काफी चीजें सीखोगे और आपको Right. ये एक्चुअली रियलाइज होगा कि आपको ये पसंद आता है कि नहीं. इफ यू आर ऑलरेडी अ योगा प्रैक्टिशनर जो एक टीचर के साथ स्टडी करता है, देन आई वुड सजेस्ट फॉर यू to actually talk to your teacher saying, how can I go ahead in this? Okay. And your teacher will most probably refer books to you that she knows or he knows you will understand because of what you already know. Okay. So I know that this is not a very specific thing, but I know that I read a lot of rubbish books जिससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ at the start. काफी abstract चीजें थी. So in yoga it's very important that you practice and experience things on your own. फिर आप books पढ़ो. So if you've never done yoga before, I would suggest enrolling with one teacher that you like and explore. ऐसा नहीं है कि आप पहले की योगा क्लास में जाओगे आपको मजा आएगा. अलग अलग टीचर्स ट्राई करो. एक टीचर के साथ आपको क्लिक होगा, उनके साथ आप प्रैक्टिस करो and you stay with them for at least 3 months, and then you text me for book recommendations I will give you. But if I tell you right from now, it's super boring and मजा नहीं आने वाला. Like specific books पढ़ के. Even anatomy, the thing is that most of the books I read are so they're very reference books type. ये ऐसे नहीं Hmm. है that you'll read by novel. So it's again something like अगर आप बेसिक कोई भी सर्टिफिकेशन करोगे, इवन इफ इट्स टीटीसी, उसमें भी काफी में anatomy कवर किया जाता है. So if you've done that, then you'll be able to understand the books that I read. Otherwise, it's no fun really. But yeah, like I don't think I want to recommend specific titles right now. Of Hmm. course, people who already follow me, they know they can always approach me for suggestions depending on if I know you and how much I think that you benefit from it. Got it. But in general, basic books, I wouldn't recommend any that up yoga ke liye padho. Got it. Got it. Right. The second thing, like an extension of this part of the conversation, would be to talk about the earning potential. Mhm. जैसे आपने बोला कि सेफ्टी नेट होना चाहिए बिकॉज इनकम आते आते
लग जाएंगे 6 महीना, 8 months और 1 year डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. तो Correct. कैन यू हेल्प द लिसनर्स plan their finances and build some expectations for them कि यार इतना आप कमा लोगे and this is the growth potential, like starting level से लेके experience level तक थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में कुछ बॉल पार्क या कोई रेंज आप शेयर कर पाओ तो कि कितना कमा लेते हैं फिटनेस कोचेस या योगा प्रैक्टिशनर्स इंडिया में. Okay, so I'll be a little exhaustive so that they'll benefit more, right? That's fine, right? So इफ आई ओनली तो फिटनेस बहुत बड़ा रियल्म है, ठीक है, और Yeah. उसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, आप एक स्ट्रेंथ कोच बन सकते हो, जिम में काम कर सकते हो. तो currently I will stay limited to what the question that you asked is, which is yoga. Okay, so Okay. if you're starting as a yoga trainer जिसमें आप आसना सेशन सिखा रहे हैं, लोगों को फिजिकल प्रैक्टिस सेशन सिखा रहे हैं, तो उसमें दो ऑप्शन है. आइदर आप एक स्टूडियो के साथ एम्प्लॉयमेंट ले और काम करें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट यू विल हैव, या फिर आप एक आजकल ऑनलाइन काफी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए हैं, तो आप उनके साथ काम करें फुल टाइम, वो आपको क्लाइंट्स बेचते हैं, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट होता है. सो दिस इज द एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट ऑफ योगा ट्रेनर. या फिर आप फ्रीलांस योगा ट्रेनिंग करें जिसमें आप खुद के सेशंस लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर्सनल ट्रेनिंग या ग्रुप, और आप स्टूडियोज में भी सेशन लेते हैं, बट आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है उनके, आप बस एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है. लाइक आप उनके लिए सिर्फ 2-3 बैचेस लेंगे और फिर आप अपना काम करें, तो वो फ्रीलांस ऑप्शन है. सो Okay. यू कैन बी एम्प्लॉय और फ्रीलांस. ओके, now when it comes to a career in fitness, it is very individual. It's like आप जितनी मेहनत करोगे और जहाँ पे आप रहते हो उसका बहुत असर पड़ता है आपके इनकम में. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेट्रो सिटी में हो, इंडिया में, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, आपकी अर्निंग पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम है फिटनेस में देने के लिए, राइट? तो मुंबई में अगर आप खुद के सेशन सिखा रहे हो, स्टूडियो में भी कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सेशंस यू टेक इन अ डे, and the place in Mumbai that you are also taking sessions, that also matters. You can earn, depending on where you start with, starting from maybe 5,000 if you're working with a studio, to going up to 50,000, a lakh, or even more, because it depends. अगर आप corporate trainings कर रहे हो plus लोगों के साथ training कर रहे हो, corporate में आपको और earning मिलेगी. So there are teachers I know who get up to 1 lakh, 2 lakhs per month, and there are teachers who I know who are not doing that well, or but they are happy with it because they're just happy that they are getting a little bit of money and they earn about 10K, 20K. So it definitely depends on how you exploit the opportunities around you. If you are in a Hmm. metro city like Mumbai, Bangalore, Delhi, the thing is that people around you can pay you more because they are earning that much in that range. So you can make your own market. They Because have disposal income. Exactly. So, you Hmm. can earn well in that case. And वहाँ पे अगर आप corporate trainings भी लो, corporate sessions लो, तो वो भी आपको काफी, like, you can make a good amount of money even taking one, two sessions per week for them, अगर आप Hmm. non metro cities में रहते हो, Hmm. I would actually say pre-COVID, the exposure to fitness was less and you wouldn't be able to earn a lot. But COVID has changed everything. So even if you live in a non-metro city and if you are smart in building an online brand and in collaborating with good online companies, you can earn very well even in an online setup. So this is a very nascent industry. You have to understand that. So the opportunity is just growing now. There is more demand for coaches that companies have. Hmm. People are getting more aware. उनको suddenly fit बनना है कोविड के बाद, उनको हेल्थ की चिंता हो गई है, तो लोगों को चाहिए अच्छे ट्रेनर. So it is an industry which is demanding of more trainers. So if you enter it at this stage and if you're smart about it, there is no limit to your earning cap. Like at least in a corporate setup, you know how you have to go climb a ladder and then go up with a good advantage of a career like this is that there is no cap like that. You can go from 0 to 100 right from when you start, but the disadvantage is that it's risky and it's not a Hmm. guarantee कि तुम 0 to 100 पे जाओगे. You get it? So Yeah. it depends very highly on where you are and how you exploit the earning capacity and opportunities that you have around you. And you have a lot though. If you're smart, if you use your online platforms well, if you collaborate with the right people, there is no limit. Like you can earn really well if you're smart about it. Hmm. Wonderful. Very exhaustive reply indeed. Um,
तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कैन रियली पे यू वेल, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मिलती कैसे हैं? लाइक सामने से आती हैं बिकॉज़ या फिर मुझे कोल्ड ईमेलिंग या कुछ ऐसे रीच आउट करना रहता है अपनी साइड से? अप टू एवरीथिंग सो आपको सामने से भी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास चलते हैं एंड मेरी एक स्टूडेंट किसी कंपनी में काम करती है और वो बोलती है मुझे इस दिन के लिए आई वांट अ योगा ट्रेनर, कैन यू कम एंड कैन यू सेंड मी एन ईमेल एंड कोट योर रेट्स फॉर दैट हुँ, आवर एंड अ हाफ और अ डे वर्कशॉप। तो वो एक नेटवर्किंग का हो जाता है। इफ हुँ, यू आर तो वो है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, नंबर हुँ, वन, दैट्स द फर्स्ट सोर्स। नंबर टू, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, हुँ, इंस्टाग्राम। ये चीजें फन के लिए नहीं है। आप अगर आप ये काम करते हैं तो ये चीजें आपकी करियर बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। यू हैव टू शो हु यू आर, करेक्ट। योर एक्सटेंट ऑफ योर नॉलेज, आपकी सर्टिफिकेशंस, एंड इन फिटनेस हाउ यू टॉक, हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, दे मैटर अ लॉट। Your thoughts, your insights on different topics on fitness matter a lot. So if you're active on LinkedIn, I've got a lot of opportunities through Twitter, LinkedIn, and Instagram too, even for corporate setup. So that's something that you can do. Social media. Third, cold emailing and DMing are really good tools. I'm actually very bad at it. मैं इतना नहीं करती है, but अगर if you're good at it, it's a big superpower because उसमें like if you compose a nice email introducing yourself, आप LinkedIn पे actually search filters होते हैं काफी companies के लिए, और even the big companies that come to your mind, you can always search for their HR on LinkedIn or uh, look at the HR personnel in LinkedIn. वो filter होते हैं जिससे आप कर सकते हैं. You can either send them a cold DM on LinkedIn, or if their email is listed, you can send them an email. And वो एक आप draft करके रखो email about. हुँ, It's not guarantee कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, पर अगर आपने सोचो 20 ईमेल भेज दी, उसमें से 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, that's pretty good. So you have to हुँ, be quite relentless and have a thick skin. Like ऐसा नहीं है कि ओ उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ओ no, there has to be absolute shamelessness and thick skin for rejection when you're working when you're working as a freelancer, especially. So if you can do that, these are the ways that you can get corporate trainings. हुँ। बट आई थिंक एक डायकॉटमी इधर ये है कि मैं अगर लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक तो कोल्ड ईमेलिंग चलेगा, बट आई कांट डू द सेम व्हेन इट कम्स टू लाइक इंडिविजुअल क्लासेस, बिकॉज एक परसेप्शन होता है ना कि यार शायद इसका चल नहीं रहा होगा इसलिए कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मैसेजेस भेज रहा है। आई Correct. मीन, डू यू थिंक That's पीपल हैव दैट माइंडसेट? correct. I have that. The thing is, I don't like it when people push their stuff on me, their products themselves. I'll get very put off. So that's why I don't do it because personally, I don't like it. Right? I'm not saying for corporate. I'll tell you for individual classes how you can grow. Word of mouth. There is nothing except word of mouth that helps you. The thing is, आप जितने आपके 50,000 फॉलोअर हो सकते हैं सोशल मीडिया में, आई बी ऑनेस्ट मेरे नहीं है इतने. आई डोंट हैव बिग अकाउंट्स ऑन एनी सोशल मीडिया, लाइक दे आर क्वाइट बिग अकाउंट इन द सेंस कि मेरे पास नहीं है 10K भी, एनीवेयर. आई हैव स्मॉल डिसेंट साइज ऑडियंस like 3K, I think 5K on Twitter. And I've never aimed to get a big audience on social media. But I'll be honest, मेरी क्या learning रही है, ठीक है? मैं ये सोचती थी कि अरे इसका सोशल मीडिया ऑडियंस इतना बड़ा है, तो इसका मतलब इसके क्लासेस बहुत अच्छे चल रहे होंगे, इसका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा. दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ बिग अकाउंट पीपल, मे बी उनको पहले महीने में पैसे मिल जाएंगे, बट द सेम स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स वोंट कम अगेन टू देम. नाउ दैट्स बैड. वर्ड ऑफ माउथ फर्स्टली. आपका सोशल मीडिया ब्रांड इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम इंपॉर्टेंट है, विच इज वाई नॉलेज। I invest my money on knowledge, on classes, on learning, on my own education, because what I teach my students, that is what gives me income, not anything else. Okay. So unless अगर आपका वो clarity नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, आपके पास लोग नहीं आने वाले. So if one person is learning with me, how I grew, I'll tell you. मैंने कोई कोल्ड ईमेलिंग, डीएमिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं, ठीक है. मेरे पास एक बंदा आया, that person got his friend, that friend got his cousin, that cousin got his mother. That's how my network grew. Because they liked me and they thought their own people will like me, they started getting more people. Okay, that's how I grew. Then of course social media does help, but to be honest, मुझे इतने clients नहीं मिलते वहां से. Like I'll get one or two, I'll get 5, 6 some months, but that is why it's not my focus. My focus is my work. My work speaks for itself. That gets me more clients.
And social media helps, it aids, but it's not the only thing that you can rely on, right? So आपका actual class, which is why I said you need patience. 1 year तो लग जाता है आपके like regular students बनने में, and उतना time तो is where you're creating to maintain your own family. Now you can skip this, by the way, if you're employed with a studio या फिर Hmm. आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, Yeah. वो आपको खुद ही क्लाइंट्स भेजते हैं, एंड फिर आपको ये सब का स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता. यू नो दैट Correct. you'll always have a steady inflow of clients, so that is also a good way of earning money if that's what you think that suits you Hmm. more. For me, I like the freedom I have for my own time. I like conducting my classes my way, so इसलिए I don't like being employed under someone, to be honest. Hmm. Right. So you are doing both, like online and offline classes, or you're just completely doing online? No, so I was doing online and offline last year, but currently I've taken a short break from offline sessions because I'm in that phase ki I want to change a little bit of my structure of sessions. And also, honestly, last year मेरे को like मुझे ब्रेक नहीं मिला बिल्कुल भी, in the sense that I was constantly working and I also didn't travel at all. I was in Mumbai for that entire year, and all I did is work, and my hours were pretty insane. So this year, that's why I knew that it's not sustainable for me, and I actually, like, I'm entering into, I think, my fourth, almost 5 years now of being a coach, and I wanted myself to see ki, what next for me. So I'm taking about the next 3 months. Now I'm just online, mainly because it gives me breathing space ki, uh, Hmm. to understand what's next for me. But Got definitely, I will be doing a mix of online and offline once this phase ends and I can plan how I want to get my offline classes back in place again. Because last year I was working with a studio. So now it. it's going to be a little bit of a change. Right. But you आप ट्रेन कर रहे हो, so do people find online classes effective क्योंकि फॉर्म करेक्शन वगैरह ठीक से हो जाता है? Because I am trying to enter the shoes of a yoga practitioner, तो मैं कैसे अपने clients का फॉर्म वगैरह करेक्ट कर सकती हूँ if it is in the online mode? ऑनलाइन में द वे दैट आप ऑनलाइन सिखाते हो वो काफी डिफरेंट है ऑफलाइन से, और उसके लिए एज अ टीचर आपके वर्बल क्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए. सो your Hmm. observation about how they are moving has to be very exact, Okay. and also your cues. आप वेग क्यूज नहीं दे सकते, आपको बहुत सिंपल भाषा में कन्वे करना है जिससे द पर्सन इंस्टेंटली अंडरस्टैंड यू. ये चीज आपके फर्स्ट क्लास में आप नहीं सीखोगे. एज अ कोच यू विल हैव 10 sucky classes before you have one good one. Okay, and you have to go through this humiliation. जो आप खुद एक गंदा क्लास लोगे, लाइक उनको नहीं पता चलेगा पर आपको पता है कि आपने अच्छा नहीं किया. तो वर्बल क्यूज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, एंड दिस ओनली इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस. टू हो जाता है, लाइक इफ यू आर रेडी टू लर्न एज अ प्रैक्टिशनर, इफ यू आर कोचेबल, देन ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट डजंट मैटर. What Okay. matters is the teacher. So if you show up and you're ready to learn and you have an open mind, then you leave it up to the teacher and you surrender. So these are skills. Verbal cueing is a skill, and also the other person being coachable is also one thing that has to be there. So if both are, at the same wavelength, then it's very possible. Because I myself didn't understand this. जब COVID हुआ था तब तक मैं offline सिखा रही थी, right? तो I Hmm. remember मैं भी ये सोच रही थी यार ऑफ ऑनलाइन क्या होता है, बकवास है, एंड ऑनेस्टली मेरे फर्स्ट सेशंस ऑनलाइन, they were so bad. They were so horrendous. I was like, yeah, I felt like I was bad. But then suddenly, like, once you get into that rhythm and you practice, like, I worked hard. Like, I had to change the way that I talk. I had Hmm. to, what I used to do was, I used to record, I used to act like a crazy person. जब मैं खुद के क्लास प्लान करती थी, मैं वो क्लास सिखाती थी खुद को. लाइक आई रिकॉर्ड माई सेल्फ ऑन माई Hmm. फोन, ऑन द लैपटॉप, और मैं खुद को देखती थी एंड मैं सुनती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो उससे बहुत फर्क पड़ा. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वर्कड ऑन दिस. एंड देन Hmm. स्लोली स्लोली यू रियलाइज कि बहुत फायदा है ऑनलाइन का, क्योंकि जो मैं सोची थी ऑनलाइन बकवास है, अभी आई एम इन अ प्लेस कि मैं ऑफलाइन सेशन से ब्रेक ले सकती हूँ. बट मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुंबई से नहीं है. वो लोग लाइक आउटसाइड ऑफ मुंबई से, आउटसाइड ऑफ इंडिया से. आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूएस, from countries in the EU, from like China. Like I never understood like if I could ever reach these people from my own house. But I have so many international students too now, and they are regulars in my class. So my offline class से break ले लूँ, but online से break नहीं होता मेरा, because I like Hmm. showing up now.
and I've become part of so many people's life online that it's a different world. So now I know that jo bhi ho life mein online is to stay. Like all fitness coaches should explore this option. And if you work Hmm. on your verbal cueing and if the student is ready to learn from you, then there is nothing stopping you. Form correction भी हो जाता है. एंड प्लस एज अ कोच आपको रियलाइज होता है कि यार हर समय टच करने की बिल्कुल मेरे को बहुत चिढ़ाती है लाइक तुम्हें टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पर्सन Hmm. स्पेशली लाइक for women training with male coaches also sometimes it's very uncomfortable, Hmm. right? It's not always comfortable, and Hmm. I feel like if you have to touch someone to check their form or improve their form, Hmm. तुम एक अच्छे कोच नहीं हो. I'm sorry this sounds blunt, but यही सही बात है क्योंकि Hmm. honestly the first thing you have to do is verbal cues. और आपका कोई हक नहीं होता है किसी को टच करके मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, बिकॉज यू मे हर्ट देम. यू डोंट नो हाउ दे मूव, उनकी क्या हैबिट्स है. तो it takes me at least um, 5 to 6 sessions to understand how a person moves. And only then I ask them their consent and I touch Hmm. them if I feel it's necessary to modify. Otherwise, it's not necessary at all. A lot of things can be done only by verbal cues. मेरे ऑफलाइन सेशंस में भी मैं लोगों को रैंडमली टच नहीं करती unless they really need it and I know they'll be needed. So if you don't need to touch, that's a myth. And genuinely offline classes में भी इतना touching watching होता है नहीं. Like so it's very doable. Online is doable, offline is doable. You can make it work. It depends on you. Hmm. Hmm. वाओ! आई जब आप ऐसे आंसर्स देते हो ना, लाइक मेरे दिमाग में एक पूरा पिक्चर चल रहा होता है, यू इन द स्टूडियो, यू इन द क्लास। बहुत ही लाइक एक्सटेंसिवली आप एंड टू एंड मुझे विजुअलाइज करा रहे हो, एंड आई होप द ऑडियंस, द लिसनर्स आर ऑल्सो एबल टू डू सो, एंड इट मेक्स द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ me actually being into trying to be in the shoes of a yoga practitioner so realistic. Thank you so much for that, for so much detailing and minutest of the details, I would say. So Thank you for saying that. I always think that I appreciate talk, your but I always think I talk too much. Sorry. I'm talking and I'm like, oh man, I think I'm talking too much. But yeah, thank you for being such a patient listener. नो 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 एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल में पता चल रहा है, तो मैं भी वो डेप्थ्स एक्सप्लोर कर पा रही हूँ. इट्स नॉट लाइक आई थिंक यू आर गिविंग आउट नेसेसरी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन. That being said, I believe this brings us to the end of the podcast. So I want you to share a few tips for people who want to pursue their career as a fitness coach. Like any tips that you feel that are important. Number one, ask yourself, do you have a routine that you're proud of right now? Like a fitness routine, whether it's strength training, yoga, आपको जिसमें भी interest है. क्या आप आसना practice regularly करते हो? क्या आप training regularly करते हो? Ask yourself that. Number one. Number two, write. My major tip for you is to write pros and cons. Write your why. Why do you want to be a fitness trainer? Why do you want to pursue this field? And be very very detailed about it. Like if आपको ये clarity नहीं है तो आपको फिर self belief भी नहीं आएगा. फिर आप ये try करोगे, फिर आप give up कर दोगे, and then it becomes a vicious cycle. So be very Mhm. clear, and clarity के लिए I feel writing is the best way that you can do. Write and talk to people in the same field. Okay, two. Number three, you will never not be afraid. Embrace the fear. I'm not saying that run fear nahi hota, remove that fear. No, you can't. I am scared even now. I am scared every month. मेरे batch चलेंगे कि नहीं? I am scared when I take a new student. Is she going to like me? Is he going to like me? You will always be scared. Do it anyway. Whether it's a career transition, whether it's um, being a fitness trainer, every single month, the uncertainty you face, you will always be scared. And if you DM people like me asking me, oh, I'm nervous, oh, I'm scared, so am I. Like, I am scared all the time. The only difference between maybe me and you is that I know that I'm scared. Treat that fear as a companion. It's there for a good reason. It's looking out for you. Give yourself good enough reasons. What can I do if it goes wrong? What is my backup if it goes wrong? Pad yourself with these tools. You'll still be scared and do it anyway. So these are just three simple tips that I want you to, keep. And of course,
like don't hesitate, ask people. It's nice that you're following Pooja's podcast too. It tells me that you're interested to grow, so you already know कि वो कीड़ा है आप में. So if you watch this podcast, you know that कुछ तो कीड़ा है, so maybe explore it. You just have one life, so don't limit yourself thinking लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाओ फेल तो क्या होगा, ठीक है. It's fine. Yeah, you like eventually कुछ ना कुछ figure out हो ही जाता है. Exactly. Absolutely. So that's all, I believe. Thank you so much, Komal, for taking our time, for being so patient, and enthusiastically sharing all the insights that you could possibly think of, or the ones you have experienced yourself, for being so honest and so thorough throughout the conversation. Really, really appreciate it. And I wish you all the best. I hope कि आपको सारी कंट्रीज से कुछ ना कुछ क्लाइंट्स मिल जाएं, एंड यू कीप ग्रोइंग ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड यू कीप मेकिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट. आप मैंने आपकी कुछ रील्स देखी है इंस्टाग्राम पे, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, एकदम रिलेट होता है उससे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड गाइज, इफ यू मेड दिस फार, समझ जाओ कि एज कोमल वाज मेंशनिंग कि अब कुछ तो कीड़ा है. परस्यू इट इफ यू मेड दिस फार, एंड डू फॉलो कोमल ऑन ट्विटर. She's posting nice content there on Instagram as well. And if you want more details, if I've missed out something, if we've missed out something, you can reach out to her, send her a DM. She's super sweet, and I'm pretty sure she'll help you out. So thank Thank you so much, Komal. Thank you so much for having me.